is ready, please put your attendance in the chat box so that we can proceed. Today is 2nd of February. We know that A is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 power N. This is your basic formula to find the amount. This is the basic formula to find the amount. So now what we are supposed to do, we are supposed to see that in this, the A is the amount, P is the principal, R is the rate of interest, and N is the number of years. So what we are going to do, come down to page number 142. There you can see finding the rate of interest. And we have example number 19. If a sum of 2250 amount to 2560. So we have, first we do the data collection. The principal is equal to 2250. The amount is equal to 2560. The time period is equal to 2 years. Find the rate of interest compounded. We have to find the rate. जो भी rate find करना होता है वो यहाँ पे लिखना रहता है. The rate is equal to this. So now this is the way that we have to find the rate. Very important. So please pay attention. Let us put all the values into the formula. 2560 is equal to 2250 1 plus R upon 100 power 2. So this will be coming over this side. So 2560 upon 2250 is equal to 1 plus R upon 100 power 2. 0 0 कट. अच्छा यहाँ पे 2 है ना, पावर में 2 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेना रहेगा. रिमेंबर, इफ टाइम इज इक्वल टू 2 years, then square root. If time is equal to 3 years, then cube root. इसको याद रखना. यहाँ पे टाइम 2 years है ना, तो इस साइड आपको स्क्वायर रूट लेना है. सो 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 अपॉन 15. 16 upon 15. Right? Okay. So now what we are supposed to do? Sixteen upon 15. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 upon 15 is equal to 1 plus R, क्योंकि दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया. यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो 16 upon 15 आया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर चला गया, तो 1 will go on the left side. 16 upon 15 minus 1 is equal to R, that is rate of interest. अब subtract करो. 16 minus 1 upon 16 minus 15 upon 15, क्योंकि मैंने 15 मल्टीप्लाई किया. तो what will be the answer? वन अपॉन 15. ठीक है, अब ये 50, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं. यस, सो 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू R अपॉन 100. ये 100 यहाँ पे चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू 100 अपॉन 15. अब होगा कटिंग. 5 3s are 5 20s are. सो इसको करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कंपल्सरी. सो रेट इज इक्वल टू 6 इंटीजर 2 अपॉन 3 परसेंटेज. This will be your answer. Am I clear with everything? Now let us do one more. Yes, let us do one more example, then you will be able to understand. Let us do one more example.
Come down to page number 143. Try this 4. In that, we'll do the fourth sum. Right? Let us do the fourth sum. Try this for question number 4. Question number 4 says that, no, not question number 4. We'll do, just a moment. Okay, fifth one, question number 5. Question number 5 says that what interest rate compounded annually is needed. So we have to find the rate of interest for principal of, the principal is given rupees 15625. Amount is given 17576. Time period is given 3 years. Please write it down. इतना तो लिख लो. The time period is given is 3 years. So what we are supposed to do, please pay attention. Whenever there is this type of question, you have to find the rate of interest. And in that rate of interest, यहाँ पे अगर 3 है तो क्यूब रूट लेने की तैयारी रखना. So amount is equal to P1 plus R upon 100 power n. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 17576 is equal to 15625 1 plus R upon 100 power 3. अब ये जो नंबर है, this is in multiplication. So when it goes in the left side, it comes into the division. 17576 upon 15625 is equal to 1 plus R upon 100 power 3. मैंने आपको बोला था अगर टाइम इज इक्वल टू 3 years, then you have to take the cube root on both the side. Take cube root on both the side. 17576 और 17576 और 15625 का क्यूब रूट क्या आएगा वो मेरे को चेक बॉक्स में लिख के दिखाओ. और यहाँ पे हो जाएगा 1 plus R upon 100. I want everyone to put the answers in the chat box. 17576 का cube root I have taught you. Everyone please put your answers in the chat box. वन 17576 and 15625 का cube root क्या होगा? Only one person is putting. Everyone has to put the answer in the chat box. Fine. So here I can write 26 upon 25. अब ये जो 1 है वो इस साइड आ जाएगा. सो आई विल राइट ओवर हियर 26 upon 25 minus 1. तो इसका मतलब हमेशा ये हो जाएगा 1 upon 25. अब हम लिख सकते हैं 1 upon 25 is equal to R upon 100. 1 upon 25 is equal to R upon 100. ये 100 इधर चला जाएगा तो 100 upon 25 is equal to R. 25 ones are 25 fours are. So the rate will be 4%. This will be your answer. I want everyone to write it down, please. It's a very important question. ट्वेंटी फाइव यहाँ पे कैसे करेगा देखो मैं आपको समझा देता हूँ.
यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। 26 माइनस 25 इज 1, 1/25। 1 तो यहाँ पे आ गया था ना, सो ओनली दिस वाज रिमेनिंग। सो 1/25 इज इक्वल टू r अपॉन 100। 100 अगर ऊपर चला जाएगा तो 100/25 इज इक्वल टू r। Please write it down. This is very important for you to understand because in this question you have to find the rate of interest. Okay. I already taught you how to find the principal. I already taught you how to find the rate of interest. Now we are going to learn about how to find the time period. How to find the time period. How to find the time period. Just a moment. Let us see, for example, if you have a question which it is given, in what time will 8,000 amount to? So principal is given 8,000 rupees, 8,000. You have to find the rate of interest and amount is given. 8820. Amount is 8820. Rate of interest is 5% per annum. 5% per annum. So very simple. पहले तो फॉर्मूला में लिख दो a is equal to p into bracket 1 plus r upon 100 power n, that is number of years. वही तो ढूंढना है. Okay, so here we have 8820 upon p, क्योंकि p इस साइड आ जाएगा. 8,000 is equal to 1 plus 5 upon 100 power n. Can you see 0 getting cut? Still we can reduce it. 2 400s are and 2 441s are. Right? Okay. Can you see that both are the squares of some numbers or cubes of some numbers? Square of 21 upon 20 square. मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ 441 upon 400 की जगह पे. Yes. So this will be equal to, यहाँ पे 5 को कट करो, 5 1 5 20 जा, 20 इधर चला जाएगा, 20 plus 1 upon 20 हो जाएगा power n. So 21 upon power 2 is equal to 21 upon 20 power n. It is very simple to identify. N is equal to dash. Please put your answers in the chat box. N is equal to dash. Very good. We'll solve one more sum in which we'll find the number of years. Come down to page number 143. Question number 4. Page number 143. Try this 4 का question number 4. यहाँ पे पहले लिख दो PRTA. अच्छा, प्रिंसिपल दिया गया. इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1,60,000, रुपीज 1,60,000. और क्या दिया गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. टाइम पीरियड not given, we have to find. And 194,481. 194,481. Okay.
Now what you are supposed to do, you have to see that time हमें ढूंढना है, right? Very simple, बहुत clear है. Very simple. I'll now give you the shortcut trick. Listen. Whenever these types of questions are there, first you take A upon P is equal to 1 plus R upon 100 power n. n तो ढूंढना ही है हमें. So this will be 194481 upon 160000 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है तो 5 100 ऑटोमेटिकली 1/20 हो जाएगा और 20 यहाँ पे जाएगा तो 21 हो जाएगा. 21 अपॉन 20 पावर n. कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको पकड़ लो. 1600 दोनों साइड का डिनोमिनेटर पकड़ो, उसको 20 से करते जाओ. 20 से करोगे तो क्या होगा 0008. फिर से 20 से करते जाओ 004. फिर से 20 से करो 20. फिर से 20 से करो 1. अब 20 कितनी बार आया 1 2 3 4. n इज इक्वल टू 4 years. इसको भी ये भी यही होगा 21 इज मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 4 टाइम्स होगा ना तब जाके तुमको ये मिलेगा. आप चेक कर लेना इस तरह से. प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड बाय डिवाइडिंग बाय 20 तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी. वन मोर सम विल डू देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी सिंपल. One more question we'll do. Come down to page number 145. Very easy trick I have given. Page number 145, exercise 10B, question number 7. In what time? Question number 7. In what time? तो टाइम तो हमें ढूंढना है, ठीक है. PRA दिया हुआ होगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15625 रुपीज 15625. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है 12% और अमाउंट दिया गया है ₹21952. वेरी सिंपल ट्रिक टू अंडरस्टैंड. ध्यान रखना वो इजी वस्तु से आप A upon P is equal to 1 plus R upon 100 पावर n. क्योंकि P यहाँ पे हो कि यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, बाद में उसको लेगा पहले से लेंगे. So 21952 upon 15625 is equal to 1 plus 12 upon 100. As it is n को तो रखना ही क्योंकि n तो ढूंढना है. Let us do the reduce form. 2 6 are 2 50 are 2 2s are sorry 2 3s are 2 25 are. तो 25 यहाँ जाएगा तो 25 plus 3 28 हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 21952 अपॉन 15625 इज इक्वल टू 25 plus 3 28 अपॉन 25 पावर n. अच्छा मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर को पकड़ लेना. 15625 को 25 के साथ कितनी बार डिवाइड कर सकते हो 25 625 जा 25 25 जा 25 1 जा 25 को कितनी बार डिवाइड करना पड़ा 3. n is equal to 3. क्या आंसर है बताओ. वेरी इजी ट्रिक. How many of you are able to understand? Please put a thumbs up in the chat box. Very easy trick to understand.
Okay, fine. I'll give you one more sum. Are you all ready? I'll give you sums to solve. Just give me a moment. Okay. Question number one. P is equal to dash. R is equal to 10% per annum. Time is 2 years. Amount is 12,000. Question number two. P is equal to 22500. Rate of interest is 8% per annum. Time is 1 year. Amount is equal to dash. Compound interest is equal to dash. Number three. A is equal to rupees 92610. Principal is equal to 80,000. Rate of interest is 5% per annum. This is 5. And you have to find the time. 4. Amount is equal to rupees 20736. Principal is equal to rupees 14641. Time is equal to 4 years. Rate equal to dash. Please try to solve these types of questions quick, everyone. I want the answers right now in the chat box.